any software development or any system development. Because Hierarchical data model, uh, network data model. so we have to see the data model evolutions. There are different data models in there in the DBMS. तो सबसे पहले फाइल बेस डेटाबेस मॉडल था, उसके बाद हायरार्चिकल डेटा मॉडल आया, then network data model is there, relational data model is there, object oriented data model is there, no SQL data model is there, and now multi-model and cloud-based database is working nowadays very fastly. They are cloud-based database, AI integrated database is there. Also, NoSQL data model is also seen in the last lectures for the it is the key value stores. Document database is there, column family stores and graph database is there. तो उसमें MongoDB आता है. It is a document base. Cassandra is a column family and NEO4G is a graphics space. तो ये NoSQL data model भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. Also will be there see the different level of abstraction, data abstraction, physical level, logical level and view levels. व्यू लेवल में यूजर के लिए बहुत कुछ हाइड किया जाता है because user just interact with the interface. They will not interact in the about description of data, what about the data, how it will be designed. So they will not interested. They are interested only in interaction of system. Then so these are the all in the last lecture will be discussed. Today will be discussed the very important topic database design. तो बेसिकली डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? कौन से सिस्टम आप यूज़ करते हैं? अभी और 5 मिनट रुकते हैं फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हमें देखना है कि ईआर रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? एंटिटी सेट्स, एट्रिब्यूट रिलेशनशिप, सिंपल एंड कंपोजिट एट्रिब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यूड एट्रिब्यूट्स एंड डिराइव्ड एट्रिब्यूट्स. कंस्ट्रेंट के 2 टाइप्स होते हैं, मैपिंग cardinalities and participation constraint keys. There are different keys are there, primary key, foreign key is there. ER diagram, mapping cardinality, strong entity set, weak entity set. These are the two types of entity set. ERD issues क्या होते हैं और इसके कुछ रूल्स रहते हैं. तो रूल्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आज. रिलेशनल स्कीमा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ विथ सिंपल एट्रीब्यूट with complex attribute and representation of weak entity sets. So will be covered in this chapter. It's a very important chapter whenever you have to develop any new system. So that time you have to go through this ER diagram, ER model. आपको करना ही पड़ता है. Just great.
सर तुमचा आवाज येत नाहीये. हाँ, कॉल आया था ना इसलिए। अपना कौशिक है ना? कौशल, रिकॉर्डिंग इज देयर क्या नहीं आज? ठीक है। So first we will see the introduction about that. The task of creating a database application is a complex one, involving designing of database schema, design of the program that access and update the data, and design of security scheme to control access to data. तो जब आप कोई भी सिस्टम डेवलप करते हैं, so there is a very complex for the design of the database schema, design of the program, and that access and update data, design security scheme to control the access to data. The need of the users play a central role in the design process. The design of complete database application environment that meets the needs of the enterprise being modeled requires attentions to a broad set of issues. This additional aspect of the expected use of the database influence a variety of design choices at the physical, logical, and view level. So let's see the first what is ER model. Wait, I will take the screenshot for your attendance. Okay, record is on. Okay, I will take the one of the screenshot for your attendance. So what exactly the ER relationship model? तो ER is nothing but the entity relationship. तो एंटिटी किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. तो एंटिटी इज व्हाट? टेबल. ओके. डेटा मॉडल was developed to facilitate database design by allowing specification of an enterprise schema that represent the overall logical structure of database. Whenever you have to develop the new system, so first we have to develop, you have to design your database. So database को design करना पड़ता है. So that should be the logical structure of database. The ER model is a very useful in a mapping the meaning of an interaction of real world enterprises onto a conceptual schema. The ER data model employs three basic concepts: entity sets, relationship sets and attributes. तो जब आप कोई भी ER मॉडल यूज करते हैं तो उसके थ्री मेजर थिंग है: entity sets, relation sets and attributes. ER model also has
and associated डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन आपको करता है। आप कोई भी डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर अलग टेबल बनाते हैं, एट्रीब्यूट डिजाइन करते हैं, तो ये आप एक ग्राफिकल मैनर में आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स ए वेरी गुड फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपर्स टीम्स। तो एंटिटी क्या होता है एक्चुअली? एन एंटिटी इज अ थिंग्स और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड that is distinguishable from all other objects. For example, each person in an enterprise in an entity. तो कोई भी पर्सन एक क्या है, इंटर जो भी एंटरप्राइज में या कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता है, तो एक एंटिटी बोला जा सकता है। एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। हर एक से एंटिटी की प्रॉपर्टी रहती है, वैल्यू रहती है। फॉर सम सेट ऑफ प्रॉपर्टी में यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। फॉर इंस्टेंस, a person may have a person ID प्रॉपर्टी। तो कोई भी पर्सन की एक आईडी रहती है, तो वो एक प्रॉपर्टी वो whose value uniquely identifies that person. An entity may concrete such as person or book, or it may be abstract such as a loan or a holiday or a concept. तो कोई भी एक एंटिटी जो रहता है वो कॉन्क्रीट रहता है, सच एज पर्सन है और बुक है, और इट में भी एब्स्ट्रैक्ट सच एज लोन और हॉलिडे और अ कंसेप्ट। एंटिटी सेट, an entity set is a set of entities of the same type that share the same properties or attributes. The set of all people who are instructors at a given university. अभी एंटिटी सेट मतलब क्या? अभी जैसे भी अभी सपोज एंटिटी सेट्स ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, द सेट ऑफ ऑल पीपल हु आर इंस्ट्रक्टर्स एट अ गिवन यूनिवर्सिटी। इंस्ट्रक्टर रहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी पीपल है। तो इसमें एट्रीब्यूट्स, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो एंटिटी के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते हैं, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स सेट रहती है, उसको बोलते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। Attributes are descriptive properties proposed by each member of an entity set. तो कोई भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक एंटिटीज रहती है, सेट ऑफ एंटिटीज रहता है। देन उस एंटिटी के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट सेट किए जाते हैं। तो एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज will be there by proposed by each member of an entity set. Attributes, the distinguish of an attribute for an entity set expresses that the database stores similar information concerning each entity in the entity set. Attributes are the distinguish of an attribute for an entity set expresses that the database stores similar information concerning each entity in the entity set. However, each entity may have its own value. तो हर एक एंटिटी की इसकी इसकी वैल्यू रहती है फॉर इच एट्रीब्यूट। ईच एंटिटी हैज अ वैल्यू फॉर इट्स एट्रीब्यूट्स। लेट्स सी द एग्जांपल।
विल बी क्लियर अबाउट दैट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट इज एंटिटी, रोल नंबर, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एज। तो यहाँ पे अभी ये जो स्टूडेंट दिखा है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देन अभी ये रोल नंबर, जेंडर, डीओबी, एज आपको दिख रहा है इलिप्स में है। ये इसी फॉर्मेट में आपको ये प्रेजेंट करना पड़ता है। रिलेशनशिप, so this is for the simple example, try to understand what exactly the entity here students, there are different attributes are there, जैसे कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एज होता है। तो ये डेटाबेस हमने डिजाइन किया और उसको रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसको बोलते हैं एंटिटी डायग्राम। अभी यह डायग्राम कैसे आएगा रिलेशनशिप्स के बाद। रिलेशनशिप is an association among several entities। तो इसमें बहुत सारे एंटिटीज एक दूसरे को रिलेशनशिप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, we can define a relationship advisor that associates instructors cats with a student Shankar। This relationship specifies that Cats is an advisor, Cats is an advisor to student Shankar। तो रिलेशनशिप क्या आएगा इसमें, सेट is a set of relationship of the same type। तो इसका भी एग्जांपल नीचे दिया है, किस तरह से देखते हैं। तो इसके अंदर सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आता है। सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इज व्हाट, इन आवर एग्जांपल thus far the attribute have been simple, that is they have not been divided into subparts। Composite attributes on the other hand can be divided into subparts, that is, other attributes. For example, an attribute name could be structured as a composite attribute consisting of first name, middle, initial, and last name. Single valued and multi valued attributes. The attribute in our example all have a single value for a particular entity. For instance, the student ID attribute for a specific student's entity refer to only one student ID। तो हर एक स्टूडेंट का एक आईडी रहता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट, इसका आईडी यही है। तो दिस इज अ ID attribute for a specific student entity refer to only one student's ID। Such attributes are said to be single valued। An instructor may have 0, 1 or several phone number, and different instructor may have different number of phones। This type of attribute is said to be multi-valued। An instructor may have 0, 1 or several phone number, and different instructor may have a different number of phones। This is called as a attribute is said to be multi-valued। Derived attributes. A attribute, double circle यहाँ पे दिया है, multi-valued attributes, and this is a composite attributes। E attribute, E partial attribute and derived attributes। derived में क्या क्या है,
डॉट डॉट लिखा है यहाँ पे, इसी तरह से वो प्रेजेंट करना पड़ता है. The value for this type of attribute can be derived from the values of other related attributes or entities. Age can be derived from the birth date. This is for derived attributes. Constraints क्या होता है? So whenever you have to design your database, there is some constraint you have to set for there. Okay. So what are that? Will be discussed here. Constraints means what? Some condition you have to set in the data level, in the table level will be there. An ER enterprise scheme may define certain constraint to which the contents of a database must conform. In this section, we examine mapping cardinalities and participation constraint. तो इसमें दो एग्जामिन किए गए. मैपिंग कार्डिनलिटी क्या होता है एंड पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है, which are up to most of the important type of constraint. ये important type से constraint के. Let's see with example and how it can be understand with the help of here. Okay. मैपिंग कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? मैपिंग मीन्स व्हाट? मैप करना, एक दूसरे को मैप किया जाता है, ए टू बी टू ए, लाइक दैट. दिस इज अ मैपिंग विल बी देयर. ओके. मैपिंग कार्डिनलिटीज express the number of entities to which another entity can be associated via relationship set. मतलब एक दूसरे को वो क्या करती है? एसोसिएट करती है यूजिंग रिलेशनशिप सेट. उसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज. मैपिंग कार्डिनलिटीज are most useful in describing binary relationship sets. Although they can contribute to the description of relationship sets that involve more than two entity sets. So mapping cardinalities are most useful in describing binary relationship sets. Although they can contribute to the description of relationship sets that involve more than two entity sets. For a binary relationship set R between entity set A and segment. For a binary relationship set R between entity set A and P, the mapping cardinality must be one of the following. तो इसमें कौन से कार्डिनलिटी आते हैं देखते हैं अभी यहाँ पे. तो यहाँ पे 1 to 1, 1 to many and many to 1 and any to many. So here diagrammatically you have to better understanding here what exactly that. 1 to 1, 1 to 1 मतलब क्या? A to B and B to A. It is called as a 1 to 1. An entity in A is associated with
at most one entity in P. तो सपोज दो एंटिटी है ए एंड बी, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है अभी। ए एंड बी ये दो एंटिटीज है, राइट। A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो इसमें क्या हो रहा है, ए इज एसोसिएटेड विथ वन एंटिटी इन पी। तो ए का एक एंटिटी और बी का एक एंटिटी एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं, एंड बी is associated with at most one entity in A. So this is a diagrammatically presentation of E. This is called as a one to one. अभी वन टू मेनी में क्या होता है, तो यहाँ पे ए और बी दो क्या है, एंटिटीज है। अभी वन टू मेनी में क्या होता है देखते हैं। एन एंटिटी ए इन ए इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर जीरो और मोर। एनी नंबर मतलब क्या, जीरो हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ एंटिटी इन बी। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, A1 B2 को क्या किया है, एसोसिएट किया है। लेकिन इसमें अभी और क्या आता है, एंटिटी इन बी however can associated with at most one entity in E। तो इसमें से ए में से किसी को भी एक को क्या होना चाहिए, वो एसोसिएट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंटिटी। सो दिस इज फॉर associated to which each others। ठीक है, तो ये हुआ वन टू मेनी। मतलब ए से क्या हो रहा है, मेनी एंटिटीज को क्या कर रहा है, एसोसिएटेड। बट बी से भी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंटिटी को एसोसिएट होना चाहिए ए की। यू अंडरस्टैंड हियर डायग्राम? हेलो? यस? नो? ऑडिबल रिप्लाई? Yes, sir. Yes, यस। sir. Yes, sir. अभी मेनी टू में वन में क्या होता है, उल्टा इसमें मेनी टू वन। जैसे वन टू मेनी था, वैसे मेनी टू वन में आता है। तो मेनी टू वन में क्या होता है, एन एंटिटी इन ए is associated with at most one entity in a B. An entity in a B, however, can be associated with any number, zero or more entities. See the diagram here also. ए डायग्राम देखो और बी डायग्राम देखो, बी में क्या हो रहा है, ए में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ए में क्या हो रहा है, मेनी टू वन। An entity in A is associated with at most one entity in B. An entity in B, however, can be associated with any number, zero or more, or entities in B, in A to B, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3. This is for many to one और any to many और many to many बोल सकते हैं इसको हम। डायग्राम भी देखो यहाँ पे, an entity A is associated with any number, मतलब जीरो भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, और entity in a B, and entity in B associated with any number, zero or more, of entities in A. So this is called as a various different types of कार्डिनिटीज देयर, या उसको रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं हम इसको। मैपिंग कार्डिनिटीज के अलग अलग फोर टाइप्स आते हैं, वन टू मेनी, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन, एंड मेनी टू मेनी, like this. So this is a theoretically they will be asked the question regarding this. What is the cardinality? Explain.
its various different types of cardinalities. Okay, cardinalities is nothing but the mapping. Mapping cardinalities बोलते हैं या रिलेशनशिप जो करते हैं आप. अभी सेकंड जो टाइप से इसमें आता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. इस ये जो ऊपर हुआ ये कंस्ट्रेंट का टाइप हुआ मैपिंग कार्डिनलिटीज. उसके बाद अभी सेकंड टाइप से पार्टिसिपेशन कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स. द पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट ई इन a relationship set R is said to be total if every entity in E participate in at least one relationship in R. तो पार्टिसिपेट होना चाहिए एटलीस्ट वन रिलेशनशिप में. If only one entity in E participate in a relationship in R, the participation of entity set E in a relationship R is said to be partial. So that is a just theoretically you should be understanding here, but we'll be understanding also in a graphically that things will be also explained in the below. Also, whenever you have to design the database, there is a different keys will be there. Some keys the column value that uniquely identifies a single record in the table is called the key of table. आप जब डेटाबेस डिजाइन करते हो तो वहाँ पे एक कॉलम रहता है. उस कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर द सिंगल रिकॉर्ड इन द टेबल. तो एक एक रिकॉर्ड सिंगली वहाँ पे स्टोर हो जाए. यूनिकली उसको रखना ही पड़ता है वैल्यू को, और उसी को क्या बोलते हैं प्राइमरी की. क्या और कोई बोल रहा है क्या? नहीं ना. हाँ? हाँ. कुछ बोल रहा है कोई? म्यूट कर दो. ओके. An attribute or set of attribute whose values uniquely identify each entity in an entity set is called as a key for that entity set. An attribute or set of attributes whose values uniquely identify each entity in an entity set is called as key for that entity set. Any key consisting of a single attribute is called simple key. जो भी एट्रीब्यूट है या कॉलम नेम जो बोलते हैं उसमें key consisting of single attribute is called as a simple key, while that consisting of a combination of attribute is called as a composite key. Composite मतलब दो attributes are combined. A super key is any combination of fields within a table.
that uniquely identify each record within that table. Super key हुआ, simple key हुआ, candidate key is there, is a subset of super key. It is a single field or the list combination of field that uniquely identifies each record in the table. Then a combination of field distinguish candidate key from a super key. And primary key is a candidate key that is most appropriate to be the main reference key for the table. तो प्राइमरी की हर एक टेबल में रहता ही है because of the unique because of the record should be properly maintained with the help of unique key. अभी जैसे हमने स्टूडेंट एक एंटिटी बनाया था उसके अंदर रोल नंबर जो है वो एक प्राइमरी की हो सकता है बिकॉज हर एक स्टूडेंट का नंबर एक यूनिक रहता है रोल नंबर किसी का डुप्लीकेट रहता है क्या जैसे कि आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो डुप्लीकेट होते हैं क्या नहीं होते यूनिक होते हैं उसी तरह रोल नंबर भी यूनिक ही होते हैं तो वी हैव टू सेट द प्राइमरी की फॉर दिस कैंडिडेट की तो these are the various rules keys are there simple key, composite key, super key, candidate key and primary key. तो ये सब की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. ER diagram can express the overall logical structure of database graphically. तो ये एक logical data structure होता है graphically. ER diagram are simple and clear quantities that may well account in a large part for the widespread use of the ER diagram. तो ऊपर अब एग्जाम लिया था अभी हमने इंस्ट्रक्टर ये एंटिटीज है स्टूडेंट एक एंटिटीज है तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है एडवाइस करता है किसको स्टूडेंट को करता है तो यहाँ पे एडवाइजर रिलेशनशिप मेंटेन हो गया तो ये कौन सा है टाइप का कार्डिनलिटीज आएगा इसमें वन टू मेनी आएगा क्या मेनी टू वन आएगा या मेनी टू मेनी आएगा आपको क्या लगता है 1 to 1. हाँ ठीक है अभी यहाँ पे ये जो ड्रॉ किए अलग अलग बॉक्सेस वगैरह है उसको मीनिंग है उसी उसी में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो जनरली रेक्टेंगल जो रहता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रिप्रेजेंट एंटिटी सेट तो फर्स्ट पार्ट में which is a which in this textbooks is a shaded blue तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है उसमें दो पार्ट के हैं तो ब्लू शेड में जो दिया है वो इट इज द नेम ऑफ एंटिटी सेट जो आप एंटिटी यूज करते हैं टेबल यूज करते हैं उसका नाम रहेगा और सेकंड पार्ट में उसके एट्रीब्यूट रहते हैं तो दिस इज फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर आईडी नेम सैलरी स्टूडेंट आईडी नेम टोटल ग्रेड डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप सेट अनडिवाइडेड रेक्टेंगल represent the attribute of relationship sets attribute that are part of the primary key are underlined linking जो रहता है links entity sets to the relationship sets dashed जो line रहती है ऊपर हमने देखा था line attributes of a relationship set
to the relationship set. तो इसमें डैश लाइंस लिंक एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप सेट टू द रिलेशनशिप सेट. डबल लाइंस आता है इंडिकेट द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप सेट. एंड डबल डायमंड जो रहता है रिप्रेजेंट आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप सेट्स लिंक टू वीक एंटिटी सेट्स. ये वीक एंटिटी सेट क्या होता है वी डिस्कस बिलो. भी मैपिंग कार्डिनलिटी जो आप बनाते हैं देखो इसके सब डायग्राम है. हर एक का मीनिंग है यहाँ पे जो अभी हमने रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया. तो इसके दो पार्ट आते हैं इसमें एंटिटी का नाम और एट्रीब्यूट के नेम रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एंटिटी. इसको बोलते हैं डायमंड शेप जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप. और ये जो ओवल बोलते हैं इसको उसको एट्रीब्यूट सेट किए जाते हैं. और ऐसे डबल रेक्टेंगल आते हैं उसको बोलते हैं वीक एंटिटीज. डबल जो डायमंड आता है उसको बोलते हैं वीक एंटिटी रिलेशनशिप. ये वीक में जाता है. डबल एलिप्स जो आता है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में आता है. और खाली डैश और रेक्टेंगल एलिप्स आता है जैसा की एट्रीब्यूट. कॉम्पोजिट में देखो दिस इज फॉर कॉम्पोजिट वो एट्रीब्यूट्स. द रिलेशनशिप set advisor between the instructor and student entity sets may be one to one, one to many, or many to one, or many to many. एक इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, या एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, या बहुत सारे इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट को भी क्या कर सकते हैं and also many to many. Let's see here again. One to one. A directed line from the relationship set advisor to both entity sets, instructor and student. This indicates that an instructor may advise at most one student and student may have at most one advisor. तो अभी मैंने वही डिस्कस किया आपको. तो one student, one advisor and one student. It is called as a one to one कार्डिनलिटी. तो यहाँ पे एरो दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा आपको. ये कार्डिनलिटी मिक्सचर करता है. ठीक है. अभी मेनी टू वन में क्या होता है देखो. बहुत सारे इंस्ट्रक्टर एक ही स्टूडेंट को क्या करते हैं इंस्ट्रक्ट कर सकते एडवाइस कर सकते हैं. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में नहीं इसलिए वहां पे एरो दिया है. और एक ही स्टूडेंट इसलिए वहां पे कुछ भी दिया नहीं. उसी तरह मेनी टू मेनी एंड अनडायरेक्टेड लाइन फ्रॉम रिलेशनशिप सेट advisor an instructor may advise many students. Advisor sets there are many advisors. Set advisor and instructor may advise many students and student may have many advisors. This is for a diagrammatically representation of your model. So you should be remember that what are the various symbols are there. क्योंकि ये सिंबल से ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि यार मॉडल
साउंड बंद था, मुझे बोलने का ना रही। सर हमें ये लगा समझ फिर में से आया सब? फोन आया होगा आपको, हाँ, क्या हुआ? इसलिए मुझे लगा कि आपको फोन आया होगा इसलिए आपने म्यूट किया पहले जैसा। नहीं नहीं, यस सर। हो क्या था सो बोल। ये ये समझ में आया ना आपको, ये डायग्राम? हाँ, वापस थोड़ा बोलूं? फिर से एक बार। वापस यस बोलो। सर, समझ में आया। सबको आ गया? क्या वापस बता? Yes, sir. ठीक है। अभी ये सारे सिंबल्स तो मैपिंग कोऑर्डिनेटी के सिंबल्स है, राइट? अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम था, ये वाला, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर एडवाइजर टू स्टूडेंट, बराबर है। इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट क्या है, दोनों भी एंटिटीज है और इनके ये एट्रीब्यूट्स है। रेक्टेंगल के दो पार्ट डिवाइड किए गए, उसमें आइडेंटिटी का नाम रहता है और उनके फील्ड के नाम रहते हैं, एट्रीब्यूट के नेम। ओके। एंटिटी रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी, डबल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी रिलेशनशिप, डायमंड डबल, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। तो अभी एडवाइजर रिलेशनशिप, सेट एडवाइजर between the instructor and the student, entity set may be one to one, one to many, many to one, or many to many. वन टू वन मतलब क्या? ये पे देखो डायग्राम। एक इंस्ट्रक्टर एडवाइस करेगा दूसरे एक स्टूडेंट को। यहाँ पे एरो दिखाया है। A directed line from the relationship set advisor to the entity set instructor and undirected line to the entity set students. This indicate that an instructor may advise, sorry, they indicate that the instructor may advise at most one student and student may have at once most one advisor. So it is called as a one to one कार्डियलिटी या रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं उसको। उसी तरह वन टू मेन में होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट को क्या करते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो दिया है। और मेनी टू मेनी में क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट एडवाइजर एंड इंस्ट्रक्टर में एडवाइस मेनी स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट में हैव मेनी एडवाइजर्स। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट किसको बोलते हैं? A single rectangle is used for representation of a strong entity set. तो सिंगल रेक्टेंगल पे इसको प्रेजेंट किया जाता है। It contains sufficient attribute to form its primary key. Diamond symbol is used for representation of relationship that exist between two strong entity sets. A single line is used to represent the connection between the strong entity and relationship. Total participation may or may not be exist in the relationship. Weak entity set किसको बोलते हैं? A double rectangle is used for the representation of weak entity. जिसपे डबल रेक्टेंगल रहते हैं उसको बोलते हैं वीक। It does not contain sufficient attribute to from primary key. Double diamond symbol is used for the representation of the connection between the weak entity set and the relationship set. Total partitions always exist in the identifying relationship. तो ये सारा हुआ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट कैसे प्रेजेंट किया जाता है और वो उसके डिफाइन किस तरह से होता है, राइट?
So whenever you are to using the ERD diagram, so there are different issues are there. तो कौन से इश्यूज है वो देखते हैं अभी हम इसमें. A common mistake is to use the primary key of an entity set as an attribute of another entity set instead of using a relationship. A double line, it is a not always clear whether an object is best expressed by an entity set or relationship. तो ड्रॉबैक बताए इसमें इश्यूज बताए. और relationship in a database are often binary. Some relationship that appear to be non-binary could actually be better represented by several binary relationship. तो ये कुछ अलग अलग इश्यूज आते हैं ईआरडी में. तो भी इसमें कुछ कोर्स रूल दिए गए डीबीएमएस में. तो देयर आर डिफरेंट रूल्स आर देयर दे प्रेजेंट दैट थिंग्स. वेल, एक सेकंड. हेलो सर। हाँ, एक आगे. अब इसके कुछ कोर्स रूल्स रहते हैं डीबीएमएस में. तो यहाँ पे 12 रूल बताए. कौन से रूल है क्या है. अभी कोर्स रूल्स आर एक्चुअली प्रपोज बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रूल प्रपोज किए हैं. Also they will be say the relationship model for database management. ये रूल से क्या होता है कि they are ensure to data integrity, consistency and usability. This set of rules basically signifies the characteristics and requirement of relational database management system. तो आरडीबी में जो है, RDBMS is nothing but a relational database model, database management system. तो उसके कुछ यहाँ पे रूल्स है, उसको कोर्स रूल बोलते हैं. CO डबल डी, ये एग्जाम में आ सकता है. हाँ, वे कोर्स रूल क्या होते हैं विल बी सी हियर. तो पहला रूल है क्या है, द इंफॉर्मेशन रूल. तो इंफॉर्मेशन रूल क्या है, all available data in a system should be represented as a relations or tables. तो जो भी आप इंफॉर्मेशन रहती है, यूजर इंफॉर्मेशन हो सकता है, या available data in a system should be represented as relations or tables. So information, all information, user informations or metadata that is stored in a database must be entered a value in a cell of table. It is said that everything within the database is organized
इन टेबल लेआउट। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन से all available data, all informations like user information or metadata information are stored in a database, in a cell, in a table layouts. तो ये पहला रूल है। सेकेंड रूल है guaranteed access rule. Each data item must be accessible without ambiguity by providing a table name and its primary key of the row also include its column name to be accessed. तो इसमें कॉलम नेम, टेबल नेम एक्सेस होना चाहिए। प्राइमरी की ऑफ द रो also include its column name to be accessed. Accessibility should be there. Third, systematic treatment of null values. जो भी null value आप देते हैं तो उसको वहाँ पे properly वहाँ पे mention करना है। Null values are not equal to a blank space or zero. They are unknown, unassigned values. We should be treated properly. तो नल वैल्यू को भी प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटाबेस, देयर शुड बी अ डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड डायरेक्टरी डिक्शनरी ऑन रिलेशनल मॉडल which keep information about table data in a database। तो हमने जो प्रैक्टिकल में आए थे डीटीएसएस में, तो हमने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल बनाया, राइट। कौन कौन था, डीटीएसएस सेंटर वाले हैं क्या प्रेजेंट लेक्चर में? यस। यस सर। हाँ, तो प्रैक्टिकल में हमने किया था ना, डेटाबेस बनाया था माइस्क्यूएल में। Yes, sir. या गुड। तो हमने वहाँ पे एक डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर हमने टेबल बनाए थे। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटाबेस, दिस शुड बी अ डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड डिक्शनरी ऑन relational model which keep information about a table data in a database। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जो भी आप ऑनलाइन डेटा यूज करने वाले या डिक्शनरी यूज करने वाले, so that should be the dynamic, you have to created database and stored in a table। The database catalog which contain the metadata about database must be stored and accessed using the same relational database management system। The next is a comprehensive data सब language, सब language होना चाहिए। The data access language कौन सा है, data access language SQL, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए ये एसक्यूएल का ही ज्यादा यूज होता है। हर एक डेटाबेस में एसक्यूएल रहता है। Must be the only means of accessing the data stored in the database and support DML, DDL, etc. Data manipulation language, data definition language को ये सपोर्ट करता है, सब लैंग्वेज को। तो कोई भी डेटा को ये सपोर्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल से भी हम क्या करते हैं, एक्सेसिंग करते हैं, एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। व्यू अपडेटिंग रूल होना चाहिए। All views of a data are theoretically updatable, can be updated using the system also। तो सिस्टम से अपडेट होना चाहिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल व्यू ऑफ डेटा आर theoretically updatable। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो ये तीनों की ऑपरेशंस होनी चाहिए, होते हैं इसके अंदर।
RDBMS में. This rule states that in a relational database, the query language, SQL जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं query language, must be capable of performing manipulation of on sets of row in a table. तो यहाँ पे हम कोई भी रिकॉर्ड को इजीली इंसर्ट कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके. सो दे आर पॉसिबल इन विद द हेल्प ऑफ क्वेरी लैंग्वेज. जैसे हमने टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. एनी चेंजेस मेड इन द वे is physically stored must not affect application that access the data. Any changes made in the way is physically stored. Physically stored, so that will be not affected in the application that access the data. Logical data independence is there. This rule states that changes to the database design should be done in a way without the users being aware of it. तो जो आप चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस डिजाइन के अंदर, should be done in a way without the users being aware of it. Integrity independence. Data integrity constraints which are definable in the language must be stored in the database as a data in a table is in the catalog and not in the application program. तो डेटा आपका टेबल में रहता है, कैटलॉग में रहता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम में नहीं रहता है. एप्लीकेशन प्रोग्राम में खाली कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स रहते हैं. So integrity independency should be there. Data integrity constraints which are definable in the language must be stored in the database. Distribution independence. In RDBMS means what? अभी हम देख रहे हैं DBMS. RDBMS मतलब क्या? Relational Database Management System. That data can be stored centrally, that is on a system or distributed across multiple systems. And non-supervision rules. This rule states that there should be no bypass of constraint by any other languages. This rule states that there should be no bypass of by any other languages. तो ये 12 रूल है, ये आपको पता होने चाहिए. इसके भी बारे में थ्योरी पूछा जा सकता है एग्जाम में. तो you have to read it and understanding it's very simple, and heading should be the right and write something sentence for there. उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या बोला गया है रूल के अंदर, वो आपको उसके अंदर बताना है. एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ.
Relational schema. The ER model and the relationship and relational database model are abstract, logical representation of real-world enterprise because the two model employ similar design principle and ER design can be converted into relational design. The ER model basically used for the new system presentation of the real world enterprise. Because the two model employ similar design principles, ER design can be converted into relational design. Relational schema. The ER diagram, the ER model सर अभी फोर्थ and चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे अभी क्या हुआ? हम कह रहे थे फोर्थ चैप्टर भी आज ही स्टार्ट करने वाले हो क्या देखते हैं ना अभी। ठीक है सर क्योंकि कैसा ना है बाकी भी थ्री थ्री चैप्टर्स तीन लेक्चर में थ्री चैप्टर्स हो गए मतलब तो कैसा कि हाँ, बाकी रिविजन और प्लस इसको कैसा वो सब करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए ना सर क्योंकि डे बाय डे एक एक चैप्टर कंप्लीट होते चले जा रहा है सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा, चलेगा फिर ये इतना खत्म करते हैं। ओके, ठीक चलेगा ना? है फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। चलेगा ओके। हाँ सर एक एक लेक्चर में एक चैप्टर करेंगे फिर भी ठीक है और उसके जैसे कि मान लीजिए अभी नेक्स्ट वीक में आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो उसके कैसा ना 10-15 मिनट प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो जाए और उसके बाद हाँ, यस। फिर चैप्टर स्टार्ट किया जाए ऐसा ओके, चलेगा। ठीक है सर ठीक है कंटिन्यू कीजिए यस, यस। तो कहाँ थे हम? हाँ, relational schema. The ER model and relational database model are abstract, logical representation of real-world enterprise. Because the two models employ similar design principle, and ER design can be converted into the relational design. तो उसको convert किया जाता है relational design में. Representation of strong entity sets with a simple attributes. Let E for entity, be a strong entity set with only a simple descriptive attribute A1, A2, dash AN. We represent this entity by a schema called E with n distinct attribute. Each tuple in a relationship on this schema correspond to one entity of the entity set E. An entity set at student of the ER diagram. This entity set has three attributes: ID, name, total, creed. We represent this entity set by a schema called student with three attributes: student ID, student name, and student total, creed. तो ये थ्री एट्रीब्यूट्स थे इससे हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया था एग्जांपल ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट ये हुआ सिंपल एट्रीब्यूट तो यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट आईडी नेम टोटल ग्रेड दे दिया है तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैज नो सिंपल एट्रीब्यूट इसमें सिंपल एट्रीब्यूट नहीं होता है composite attribute is handled by creating a separate attribute for each of the component attributes. Consider the version of the instructor entity set for the composite attribute name. The schema generated for instructor contains the attribute first name, middle name, and last name. Is no separate attribute for schema for the name. तो इसके अंदर
सिंपल एट्रीब्यूट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होता है. दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक एंटिटी सेट. लेट A, A be a weak entity set with attribute A1, A2, AM. Let B be the strong entity set on which A depends. Let the primary key of P consist of attribute of B1, B2, Pm. We represent the entity set E by a relation scheme called A with one attribute for each member of the set A1, A2, Am. Union B1, B2, Bn. So this is a representation of weak entities. तो मतलब दो एंटिटीज है ए और बी के, उसमें से जो भी है we represent the entity set of a relation schema called A with one attribute for each member of the set. तो यहाँ पे इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा है और उसको यूनियन जॉइन किया है. मतलब बोथ एंटिटीज की जो भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है for each member of the set. So this is a theoretically things for this or for today some diagrammatic representation, various symbol you have to understanding because it's a must whenever you have to develop the any software. आपको टीवाई में प्रोजेक्ट करना है तो इस उस प्रोजेक्ट में आपको यही करना है, यह डायग्राम से ही आपको वहाँ पे वापस आएगा. इसलिए ईआर डायग्राम्स के सिंबल आपको पता होना चाहिए, ईआर मॉडल क्या होता है ये पता होना चाहिए, उससे हम क्या कर रहे हैं. तो जो भी डेटाबेस डिजाइन पर्पस के लिए इसका यूज होता है, प्लस इट विल बी वेरी वेल क्लियर एंड वेल अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मैनर. So that's why in the IT industries, IT field are use such a type of model because the very well graphically understanding the developers, they are clear the all idea with the help of that. Also will be the various keys you have to set in the database. तो जब भी आप कोई भी डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो कीज रहती है, तो प्राइमरी की तो होना ही चाहिए हर एक टेबल के अंदर, तभी आपके रिकॉर्ड यूनिकली स्टोर हो जाएंगे या वन बाय वन स्टोर हो जाएंगे. यूनिकली तो सब नहीं होगा लेकिन रोल नंबर तो यूनिक रहेगा. तो दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वहां से आपको सारे 100 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट के क्या हो गए डेटा मिलेगा. प्लस रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज इज इम्पोर्टेंट आल्सो. कार्डिनलिटी रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी. किस तरह से वो एसोसिएटिविटी होता है वो आपको पता होना चाहिए. कीज अलग अलग होते हैं, सिंपल की, कॉम्पोजिट की, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की is very important. Super key, candidate key, and primary key applied to entity and relationship set. तो candidate की, super key, primary key ये entity पे apply किया जाता है to entity set and relationship sets. And they do the for relation scheme. तो ये relationship बनाने के लिए भी बहुत important रहता है. Plus uniquely रोल नंबर आना चाहिए और रिकॉर्ड स्टोर होना चाहिए. So purpose of that, they will be the required this such keys will be there. So this is for this chapter will be finished today. Okay. तो एक्चुअली आपका जो सिलेबस देखा जाए तो पहला चैप्टर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल is also completed. The
डेटाबेस डिजाइन हमने देखा, दिस मॉडल विल बी फिनिश। टोटल तुम्हारे चैप्टर्स आते हैं 4 और 7। ठीक है, एक चैप्टर में हम एक फिनिश करेंगे। तब इसमें कुछ पूछना, यू कैन बी टॉक टू। तो in the next lecture we started the relational database model। ये क्या होता है, इसके रूल्स वगैरह, टपल्स क्या होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस। यस सर। तो फिर स्टॉप करें या कंटिन्यू करें? स्टॉप कर दो सर, अभी बोर हो रहा है, स्टॉप कर दो, बोर हो रहा है। बहुत बोर हो रहा है ना? और पढ़ते आओ, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। एक सेकेंड, मुझे अटेंडेंस लेने दो, जाओ मत। ठीक है, 68। और नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ के आना है। ओके, इफ पॉसिबल। ओके ठीक है, चलो फिर। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ये फर्स्ट सेम में कौन कितने चैप्टर्स आएंगे अपने को एग्जाम में? सारे जो रह गया अभी। नहीं मतलब ये चार चैप्टर, फोर चैप्टर तक आएंगे? एग्जाम में कौन सा एग्जाम, फाइनल ना? नहीं, जो सेमेस्टर होगा। हाँ, तो ये सेमेस्टर में ये पूरा आएगा ना बाबा, पूरा रहेगा। ये देखो, वापस बताता हूँ, सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यही है बुक में, पूरा रहेगा। पूरा बुक आएगा, पूरा बुक आएगा? पूरा बुक आएगा, पूरा टोटल। अच्छा। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो सब। देखो ये सिलेबस दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हाँ वाला देखिए, हाँ। ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट रहेगा, मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट रहेगा। ये दोनों में अच्छा, से ही आपको एग्जाम में आएगा। तो ये सेकंड सेम में क्या रहेगा फिर? तो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, सेमेस्टर पैटर्न है ना आपका ये, हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है। ईयरली पैटर्न है। एनईपी अभी आपका, एनईपी में क्या अभी, पहले भी यही था, सेमेस्टर वाला ही था, अभी भी वही है, लेकिन इसमें अभी कुछ चेंजेस किए। तो ये भी इस सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट रहेंगे, सर और लेक्चर में चेंजेस होगा। सर हाँ बोलो ना आदित्य। हाँ बोलो बोलो। सर और प्रैक्टिकल्स पीसीबी सेंटर पे होंगे क्या? यस यस यस, अपने अपने पीसीपी सेंटर पे, जो तुमने सेंटर दिए होगे ना, या मैडम नहीं ने नहीं, दिए वो होगे नहीं आपको। नहीं, सेमिस्टर एंड एग्जाम प्रैक्टिकल। हाँ, एग्जाम प्रैक्टिकल अभी तो मैडम ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मोस्टली शायद सेंटर में ही हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल किए वहाँ पे। नहीं तो फिर मैडम सेंट्रलाइज भी ले सकती है, मे बी, अभी डिपेंड्स, वो अभी तक कुछ बोला नहीं है। ओके इसलिए सारे सर ये जर्नल्स वगैरह। एग्जाम हाँ बोलो ना। सर ये एग्जाम्स कब होंगे पता है क्या? नहीं, अभी जैन में रहेगा ऐसे बोल रहे थे ना कुछ। सर और ये इसके सैंपल पेपर्स मिलेंगे क्या, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? सैंपल देखता हूँ मैं, होगा तो सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। सेकेंड लीव। ये श्योर। सर वो लेकिन पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर पहले जो प्रीवियस ईयर के थे ना, उसका जरा अरेंज करके रखना, ट्राई करना प्लीज। लेकिन अभी ये एनईपी में है ना, अभी एनईपी कब चालू हुआ तुम्हारा ये? 2020 में ना सर। 2021। हाँ, तो प्रीवियस 4 ईयर के तो मिलेंगे एटलीस्ट। हाँ तो तो वो आप
जरा अरेंज करके रखना ना स्टूडेंट्स के लिए, तो हम लोग को क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। यस श्योर श्योर यस, मैं कुछ थैंक इम्पोर्टेंट यू, भी थैंक यू सो बताऊंगा, मच सर। कुछ हाँ बुक्स सर। अपना ही, कुछ इम्पोर्टेंट भी रखेंगे हम, प्लस हाँ सर, कुछ लाइक क्वेश्चन बैंक्स वगैरह ना। क्वेश्चन बैंक भी देंगे, ठीक है, ओके ओके, ताकि सो आपको ग्रेट, डूइंग प्रिपरेशन ग्रेट के लिए अच्छा लगे। सर क्या हुआ? अब जब भी एग्जाम होगा मींस टाइम टेबल हमें 1 to 2 वीक पहले मिलेगा क्या और भी पहले मिलेगा? अभी वो यूनिवर्सिटी पता, अभी वो 1 वीक पहले दे देंगे, डोंट वरी। क्योंकि सर प्रीवियस ईयर में हुआ था कि मतलब उन्हें अचानक 1 वीक या आई थिंक 3 या 4 डेज पहले उन्हें टाइम टेबल मिल गया अचानक से, इसके लिए। अभी तुम्हारे कुछ सीनियर रह गए थे, तो उनको पूछो और एक बार। सर एक्चुअली हमको एक प्रोफेसर ने ऐसा बताया कि 3-4 दिन पहले भी मिल सकता है टाइम टेबल। वही तो ऐसा है, अभी क्या तो है, मैं थोड़ी देर रुक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, ध्यान दो। तो अभी आपका कुछ मीटिंग सर नहीं हुआ क्या सैम वन मैडम में से? सिर्फ मॉड्यूल 1 ही आने वाला है ना, सिर्फ 4 चैप्टर्स है ना? क्या? सैम 1 में ये जो हाँ हाँ। फर्स्ट 4 चैप्टर वही आएगा ना, मतलब मॉड्यूल 1 ही आएगा ना बस? अरे यार तू, प्रवीण कौन सा दुनिया में है तू? मैं अभी क्या बोला? अभी जस्ट मैं आई विल टॉकिंग दैट these two models are in this semester are completed. You are to study and to the exam for this two model. और 2 क्या चाहिए? मॉडल्स। दोनों मॉडल पे, मतलब दोनों मॉडल में जितने चैप्टर है, पहले मॉडल में हाँ, कितने हैं? 4। 4, दूसरे मॉडल में कितने हैं? 3। मतलब 3, टोटल 7। 7 चैप्टर आपके एनी हाउ आपको एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट सैम में, हाँ, मतलब इसी फर्स्ट मतलब सेम में, जैन में जो पेपर होंगे उसमें। ये अभी करंट सेम में, राइट? अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट, फर्स्ट सेमेस्टर में ये दोनों मॉडल रहेंगे, बराबर है। अभी क्या पैटर्न है, इसे आपको सेमेस्टर में ही देना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है। और कुछ? सर अटेंडेंस ले लो ना प्लीज, आई हैव टू लीव बिकॉज XYZ रीजन। तो तुम्हारा अटेंडेंस ऑनलाइन हो जाता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता है, क्योंकि एक्सटेंशन यूज करके हम वो अटेंडेंस ले रहे हैं। मैं तो वैसे ले रहा हूँ, मतलब कितने टाइम आपने ज्वाइन किया, कब लेव किया, वगैरह वगैरह। अभी NAP एक्चुअली ये क्या है, ये एक एजुकेशनल पॉलिसी बोला जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ सब्जेक्ट के बारे में, लोड के बारे में, सब्जेक्ट मिनिमाइजेशन किया, मेजर सब्जेक्ट ऐड किया, मेजर माइनर ऐसा है ना आपके इसमें। तो मेजर को खाली प्रैक्टिकल रखा है, माइनर को खाली थियोरेटिकल रखा है, तो उस तरह से सेट किया है। तो व्हाट माय पॉइंट, कुशल? तो सर और फर्स्ट ईयर, हाँ, फर्स्ट ईयर आइडल से किया और सेकंड ईयर रेगुलर कॉलेज से कर सकते एनईपी के हिसाब से। लेकिन रिजल्ट का प्रॉब्लम होता है, रिजल्ट एक साथ आना चाहिए। कैसा होता है, रेगुलर का रिजल्ट लग जाता है, फिर भी आइडल का रिजल्ट नहीं होता है रेडी। अभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, कैसे होता है। ओके। एनीथिंग एनीमोर? यस, आवाज ब्रेक हो रहा है, कौन बोल रहा है? ज्योति बोलो। यस ज्योति, कुछ बोलना है? नो? तो ठीक है फिर। माइक माइक ऑन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस बोलो ना। हम लोग का जो प्रैक्टिकल होगा वो हर वीक, मतलब मैसेज तो हर वीक का आ रहा है, हर संडे सैटरडे को। तो हम लोग को मैसेज आएगा तो जाना है कि मतलब पर्सनल मैसेज आएगा? तुम कौन से सेंटर में हो? मेरा अभी सेंटर नहीं आया है, तो पता फिर नहीं चल रहा सेंटर, है। सेंटर नहीं हुआ अभी तक? हम्म, कहाँ पे रहती तुम? मैं गुजरात में। गुजरात में? हम्म, तो फिर सेंटर कौन सा दिया तूने? सेंटर तो उधर ही बॉम्बे में ही है। हाँ फिर
कौन सा कॉलेज वगैरह कुछ बोला होगा ना आपको? हाँ वो अभी पता नहीं है मेरे को अभी फिलहाल। अभी पता फिलहाल नहीं, पता नहीं। लिस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं मैडम ने? नहीं नहीं, ग्रुप में डाला होगा ना? नहीं नहीं आया है। मतलब मैं ग्रुप में नहीं हूँ, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना। नहीं, टेलीग्राम में डाला होगा ना कुछ, क्या नहीं रही? यस, लिस्ट किसी को पता है क्या पीसीपी सेंटर की किसमें है? हेलो सर। हाँ यस, ज्योति बोलो। सर मेरा पीसीबी सेंटर यशवंतराव कॉलेज है, पर ओके, उसका कोई मैसेज नहीं, कुछ मेल नहीं आया अभी तक, हमारा कुछ भी की प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो करेंगे वो स्टार्ट, डोंट वरी। हाँ, और क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ है सर। तो आप जो टीचर है ना उनको कंसल्ट करो ना एक बार, पूछो आप। मैम मैम को नाम सर। मैम को भी पूछो, और जो यशवंत राव के जो सेंटर है ना वहाँ पे विजिट करके जाओ, एक बार विजिट करके आओ कि मैं सर कब चालू होगा हमारा प्रैक्टिकल वगैरह, सब पूछ के देखो वहाँ पे। हेलो सर। हाँ ओके बोलो सर। सुधाम। सर अभी रिसेंटली मैं गया था सर यूनिवर्सिटी में। तो यस। शुभांगी मैम से पूछा था यशवंत राव के लिए। तो हाँ, उन्होंने बोला कि यशवंत राव शायद से कैंसिल हो जाएगा और नियर बाय फिर कॉलेज को अपडेट करेंगे सेम डेट में। अच्छा, देखो ये अपडेट देखो आपके लिए ज्योति, शायद सेंटर चेंज होने वाला है बोल रहे कुछ, हाँ सर। तो वो अपडेट मिलेगा आपको, वैसे पता चलेगा। हाँ, ओके और सर। एनी अदर? हाँ सुदाम, हाथ ऊपर किया है बोलो। ठीक है फिर, विल बी स्टॉप टुडे सेशन। यस, नो? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। फिर, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, Thank you, sir. थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।